My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anoop Pandey ji on my left, ECI officials and friends from the media gathered here today and also virtually connected to us. We meet again today for a press conference on that which most of you have been awaiting. इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें, हम निर्वाचन आयोग की तरफ से मोरबी की दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों एवं उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक एवं संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं. Our heartfelt condolences to the grieved families, and we pray that the departed souls rest in peace. Friends, गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी 100 दिन से ऊपर बाकी हैं. राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं. Of the 182 assembly constituencies, there are 142 general, 17 SC and 23 ST constituencies. Subsequent to the completion of special summary revision exercise, the final electoral roll has been published for the state of Gujarat on 10th October 2022, and copies of the published electoral roll has been given to all the political parties. They were part of the process by which they were finalized at each stage, and final prints, final rolls have been given to them. During the SSR exercise, the Commission has laid special emphasis on registration of new voters, women voters, transgenders, and persons with disabilities. As you see the data on the slide, for the forthcoming Legislative Assembly elections, our teams would be ready to serve more than 4.9 crore electors, of whom about 27,000 are service electors, 4 lakh persons with disability, more than 9.8 lakh voters above the age of 80 years, and out of which 10,000 voters are centenarians. And there are 4.6 lakh first-time voters between the age group of 18 and 19. Friends, there are, after the subsequent to the provision of 4 qualifying dates, all the young voters who attained the age of 18 years between the 1st of January 2022 to 1st October 2022 got the chance to get themselves enrolled. I am very happy to inform that with this amendment, 3,24,422 additional new voters in the state shall be able to cast their vote in the election for the first time. आप अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग की पहल पर जो गत वर्ष कानून में बदलाव किया गया था, उसके बाद से 4 क्वालिफाइंग डेट संभव है. तो इमेजिन अगर ये संभव नहीं होता तो जो ये 3,24,000 नए वोटर्स हैं इस बार मतदान नहीं दे पाते और इनको इंतजार करना पड़ता 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट्स का. सो अब इनका नामांकन हुआ है तो आई एम श्योर दे विल कम एंड वोट ऑल्सो, फॉर विच वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स विच आई विल कनेक्ट टू यू लेटर. कमिंग टू द पोलिंग स्टेशंस, मतदाताओं के साथ एक्चुअली हमारे एंगेजमेंट के 2 सबसे महत्वपूर्ण जगहें हैं. एक जब हम उन्हें वोटर बनाते हैं और एक जब वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर आते हैं. तो हाउ इज द एम्बियंस इन पोलिंग स्टेशन एंड हाउ मच इज द ईज ऑफ वोटिंग, दैट्स व्हाट इज अनदर criteria that we very seriously look at. We have instructed all the CEOs and DOs to visit major polling stations personally and ensure that all facilities are available there. Total polling stations की संख्या 51,782 है और हर पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 948 पोलिंग स्टेशंस होंगे. राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, दैट मीन्स 25,891. These figures are also given in the presentation which is happening and we'll provide a copy to you. इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे अपने अपने कंट्रोल रूम में. सेक्टर मजिस्ट्रेट्स विल ऑल्सो विजिट on the day of polling and before that also the polling stations.
फ्रेंड्स, सभी पोलिंग स्टेशंस पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, वेटिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, रैंप्स, टॉयलेट्स would be provided. No polling station would be on the first floor, they will all be on the ground floor. And we are this time deputing one additional special observer. This is a practice we are starting now, and we are experimenting with this. A special observer for accessibility and inclusion. We want to get report, we want to see that our polling stations are truly accessible for women, from old age, for PWDs, for TGs, and the entire process is also inclusive. So उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑब्जर्वर हिमाचल और गुजरात दोनों में अभी डेप्यूट किए हैं. फ्रेंड्स, मतदाता के जो वोटिंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 142 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. स्लाइड्स में आपको उनकी कुछ झलकी भी दिखाई जा रही है. सिर्फ महिलाएं, राज्य में कम से कम 1274 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां पर सिर्फ महिलाएं ही तैनात रहेंगी, along with the police personnel also. What you see on the right side, in the 1274 polling stations, only women, polling personnel, police personnel will greet the voters. इसी प्रकार से राज्य में दिव्यांगजनों को मतदान हेतु प्रेरित करने के प्रयास में कम से कम 182 polling stations, which you are seeing on the right side again on this slide, would be manned purely by the persons with disability. As I have said earlier also, एक सशक्त समाज के लिए ये आवश्यक है कि उसके हर वर्ग को बिना किसी बाधा के निर्वाचन में प्रतिभाग करने का अवसर मिले. इसलिए जब दिव्यांगजन निर्वाचन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ेंगे तो उससे हमारे प्रयास को और बल मिलेगा. And this is what, with this objective of inspiring the PWD themselves and also the conveying this message to the society at large, they will be manning the polling stations. Another first time new thing which we are attempting is, जब young voters को voters बना रहे हैं तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक बूथ ऐसा भी बनाया है वहां जहां सबसे कम उम्र के जो एम्प्लॉइज हैं वो ही पोलिंग स्टेशन पे रहेंगे. सो जो भी रिसेंटली रिक्रूटेड हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस प्रकार से 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे बना रहे हैं जहां एब्सोल्युटली यंग पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पार्टीज वुड बी देयर टू ग्रीट यू. सो समथिंग लाइक व्हाट इज बीइंग शोन हियर. एंड दिस इज अगेन विद आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग द यूथ, टेलिंग देम that you are not only have to get registered yourself, you have to manage the elections and you have to come and vote also. Friends, in this respect, we like to give you some unique polling stations also. ECI, as you know, has always been working towards this objective of inclusive and accessible elections. For example, there is no polling station or a building in the polling station 69 Alibad at this Bagra Assembly constituency. So what has been attempted is to convert and people had to come 80 kilometers to cast their vote to a particular station because they were all carried in a bus to another place. So this time a shipping container is being used to serve as a polling station. And with all AMF, all assured minimum facilities being provided in this makeshift one, and with 207 voters. Similarly, there are many other examples like where our election machinery is going to last mile to ensure participation. A polling station being set up, which is on the left side, only for one voter. इस polling station में सिर्फ एक ही वोटर है जो वहीं रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते. उनके लिए हमारी 15 लोगों की टीम जाएगी और एक वोट लेने के लिए. This is the strength of the Indian democracy. Similarly, for polling parties, team has to travel by boat to reach the polling stations in Siabelet Island in Arabian Sea. At the island has no alternative connectivity. Nearest town, Jafrabad, is approximately 15 kilometers away from island, and this has over 832 houses and 4,757 voters, and will go by boat and get the thing. The Commission has set up 3 polling stations in Madhopur, Jamalpur in Gir Somnath district for the Siddhis. There are total 3481 voters
of which 90% are from Siddhi community, and they are descendants of East African people who came to India during 14th and 17th century and resides here, and they are our proud voters. And this is again what the inclusivity in the Indian democracy is about. At the cost of repeating, my friends, I would reiterate, if we, the Election Commission team, put in such concerted effort to ensure a polling station with a 2-kilometer reach for voters, replete with all facilities, तो वोटर्स का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट देने के लिए अवश्य आएं। आपके माध्यम से मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं। Now about senior citizens. Commission has also endeavored to bring the polling stations to the doorstep of those voters who face difficulties in coming to the polling stations. This optional facility of postal ballot will be available to all these voters who are 80 plus, PWDs with the benchmark of 40% disability, and if by chance anybody is suffering from COVID. And a polling team comprising of 2 polling officials will go to their houses, which will be videographed, which will be with full security and under full information and knowledge of the political parties and candidates, with an option to accompany them. We will in advance provide a list of such voters who have opted for casting their vote from the comfort of their home, and will also provide them the route chart by which the polling parties will go to get the votes. And they cannot deviate from that route chart, which is displayed in advance. वोट की सीक्रेसी को अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से हम वोट लेके आएंगे, अगर ऐसा वो अपना ऑप्शन हमें फॉर्म 12D में भरकर देते हैं. And as we always say, whatever we are today, we are because of our senior citizens. And in this phase, in this round, there are 9.89 lakhs senior citizens, senior voters, 80 plus, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर वो भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के अपने जोश और समर्पण से देश के युवाओं के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, और इसीलिए वो युवाओं को भी आगे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए. Friends, similarly, Commission is emphasizing on the empowerment and participation of all our persons with disabilities. There are 4.04 lakh PWD voters who shall be given priority for entering polling stations. Provisions would be made for designated parking spaces, and volunteers shall be available. And all this they can book if they want. This will be available on the booth, no doubt. But if they want to book it, they can book it on our PWD app. Any facility, any facilitation which the PWD voters want or 80 plus voters want, they can book it at our app. We are also similarly focusing on inclusion of our TGs, the third gender voters. For variety of reasons, their inclusion, either because of various kind of social factors, has not been complete. We are focusing on it. We want them to make every one of them a voter. We have made some of them as our icons also. So any disadvantaged group in the society should deserve the highest possible recognition and respect from all of us. And Commission is very concerned and committed to provide full facilitation, full participation in an inclusive and accessible manner to all our marginalized deprived sections, which includes the 80 plus citizens, 100 plus citizens, PWDs, transgenders. We are also planning to have an outreach in certain red light areas, so that our teams go and with the fullest possible respect and secrecy and whatever is the social milieu, they get the votes made and they also get the awareness activities for the voting. Friends, 2017 की comparison में there is a 100% increase in the number of transgenders in the state of Gujarat.
there are 1417 TGs who are now registered. And it's actually a sight to be seen to believe when they come forward. They came forward when we went to Gujarat last time. And the kind of enthusiasm they had in participating and even becoming our icons to convey to the others that you come and vote for us. So we very happily recognize their commitment, and there are now 1417 voters. Just to inform you, there are now 44,904 registered third gender voters in the entire country, and even counting. In this SSR, we'd again do a great, a whole lot of effort to make them our voters. Friends, next is about the participation of the citizens. ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि सी विजिल के माध्यम से अगर नागरिक अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उनके फ़ोन से ही उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रजिस्टर्ड हो जाएगा, सारी शिकायत वहीं आ जाएगी। अगर नहीं करना चाहते हैं तो अगर लिख नहीं सकते तो एक कागज़ पर लिख के फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, और जो भी शिकायत वो करेंगे उसकी 60 मिनट्स में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होके जाएगी और विद इन 100 मिनट्स उनको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपकी शिकायत सही पाई गई, आंशिक रूप से सही पाई गई या नहीं पाई गई, और उस पर ये एक्शन हुआ। तो अगर किसी भी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी सिटीजन कोई मनी पावर, कोई मसिल पावर, कोई किसी भी तरीके का दुरुपयोग देखते हैं या किसी पोलिंग पार्टी का दुरुपयोग देखते हैं के द्वारा, तो निश्चित रूप से सी विजिल का यूज करें और उस पर कमीशन को खबर करें। सिमिलरली there is a Suvidha portal, there is a PWD app portal. Suvidha portal is for the candidates to get any facility they want to get from the Election Commission and from the staff. इसमें ये भी सुविधा है कि अगर जैसे उनको उदाहरण स्वरूप ग्राउंड बुक करनी है, तो इसमें सुविधा है कि ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की मर्जी पर है, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। This is what the digital lock-in on the Suvidha app provides, and we have given specific instructions to everybody कि सबको level playing field मिलनी चाहिए। जो पहले अप्लाई करे उपलब्धता के आधार पर पहले ग्राउंड, पहले फैसिलिटीज उन्हीं को मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टीज। Similarly, the next important disclosure is about the KYC app. किसी भी नागरिक को, किसी भी वोटर को अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ भी जानना है तो जो एफिडेविट नॉमिनेशन के दिन फाइल करेंगे उसकी पूरी की पूरी कॉपी, जिसमें उनकी क्रिमिनल डिटेल्स अगर कोई हैं तो उनके अकाउंट्स की डिटेल, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जिसको हमारी वेबसाइट पर भी है, और वो स्पेसिफिकली KYC, नो योर कस्टमर, नो योर कैंडिडेट। उस नो योर कैंडिडेट में आप उसकी एजुकेशनल कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आर्थिक और क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर कोई है तो वो क्या है, सब इस पे उपलब्ध होगा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर सो दैट वोटर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। और अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो कैंडिडेट्स को उसको मैंडेटरीली पब्लिश करनी पड़ेगी एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय अखबार में, और सोशल मीडिया पर उनको 3 बार उसकी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी बताना होगा और उसको पब्लिश भी करना होगा कि वो उन्हें क्रिमिनल के अतिरिक्त कोई दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं मिला। दे शुड गिव रीजंस, मेक इट पब्लिक सो दैट वोटर्स नो कि उस क्षेत्र में क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा कोई भी और कैंडिडेट ढूंढने में पार्टीज को क्यों और किस प्रकार से इतनी कठिनाई हुई, ये जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको रीजन से, सो दैट वोटर्स जाने कम से कम कि सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही पार्टी को मिल सके। फॉर great emphasis which we want to give, and just to explain to you on the inducement free voting and expenditure management. There is a zero tolerance which has been conveyed and will be conveyed further, that government machinery has to be absolutely impartial, fair, and provide the level playing field. It's a zero tolerance. This is being conveyed and has been conveyed to all the officials who are involved, be it civil officials, police officers, enforcement agencies.
If there is any instance which is found that there is a violation of this by any officials, we'll deal with this very, very sternly. Similarly, expenditure-sensitive constituencies, there are strict instructions to police, excise department, GST departments, coast guards, income tax, EDs, railway protection force, CISF at the railway station. And let me give you the figures, though they are still increasing and counting. In Himachal elections in 2017, total seizure was 9 crores. It has already crossed 28 crores now, including liquor, mining, and drugs and various kind of things. And still there are 10-12 days to go. We are sure this figure will increase, nothing would move. All the borders and everywhere there is a strict vigilance. And Commission is going to meet all the Chief Secretaries and DGs of the neighboring states of Himachal and Gujarat also, so that the borders are absolutely sealed. Nothing moves from the part of those borders in terms of where, if the liquor is cheaper in another place, if there is a provision in one particular place and it comes from the neighboring states, absolutely no leniency on that, and officials have been very, very strictly told about this. Similarly, the narcotics control, and in case of Gujarat, there is a long border of the coast, so coast guards have also been directed and advised that they will keep a very strong vigil on any movement of drugs which is happening, unfortunately, spoiling our youth of the country. It's happening in quite a increased fashion because of the various international factors. However, during the elections, the machinery would be extremely conscious that it does not happen. I would briefly cover about the directions given to the district officials and CEOs about the social media and the fake news. The narratives which get developed, you are all very well aware. At times, उसमें फेक न्यूज़ भी हैं, उसमें झूठे एक नैरेटिव्स भी हैं. सो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने सबको सोशल मीडिया टीम अपने यहाँ सेटअप करने के लिए निर्देशित किया गया है. सीईओ ऑफिस में भी सोशल मीडिया टीम्स रहेंगी. दे वुड कीप वॉच ऑन द फेक न्यूज़ विच अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द पीस और swing the thing in one favor or the another. Therefore, whatever strict action is possible under the various sections of IPC, if required, would also be taken. There is also an appeal through you to all the voters. अगर चुनाव के दौरान किसी तरीके की न्यूज़ का प्रचार जो उनको लगता है फेक है, तो कम से कम उसको आगे न बढ़ाएं. That much discretion और उतना विवेक अपना जरूर पालन करें. Now friends, coming to the schedule. The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें. अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें, एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स इन 100 minutes. थैंक यू वेरी मच.
एक मिनट, हम क्वेश्चंस लेंगे। आप प्लीज पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलें। मैं फर्स्ट रो से लेती हूँ क्वेश्चंस। पहले आपने प्रदीप। सर, मैं प्रदीप हूँ, टोटल टीवी न्यूज से। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जो अनाउंस हुआ है गुजरात का चुनाव और जिस तरीके से सवाल उठे थे कि देरी हुई है, हिमाचल का जब चुनाव अनाउंस आपने किया था, इन बीच कई सवाल उठाए गए, देरी को लेकर सवाल उठाए गए, तो क्या इन आरोपों का आप जवाब देंगे? वन और टू मोर। मोहित आशीष, आप अपना सवाल लें। सर, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूँ। सर, लगातार निष्पक्षता को लेकर आप लोग बात करते रहे कि हम फ्री एंड फेयर चुनाव हम लोग करवा रहे हैं। सवाल कांग्रेस ने उठाया है, आपके ऊपर निशाना साधा और कहा है कि आप स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, लेकिन इमोजी 3 बंदरों की लगा दी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस के लिए? कोई और सवाल इसी से? सर, यही सवाल था मेरा कि सर इधर आशीष हूँ एबीपी न्यूज से, जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे। सर, आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव, इन अदर वर्ड्स, नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं। और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट होगा। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें there is a tradition of counting it together, there is weather, there is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case, this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by, or we have to factor in the elections in the other state. Then, from counting, 72 days gap between announcement, this is on 8th of December, and the 18th of February. Still, there is a 72 days gap. So, it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence, तो एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। Elections after elections since the country has got independent, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेस हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता,
चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. There are terminologies like democratic recession, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, तो election authorities are facing serious issues of fake narratives. और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाई बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is it, and the results are the biggest testament of the impartiality of the commission. और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना होने दें। एंड वी आर श्योर दैट इंडियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, बिलीव मी, whenever we go internationally, I went to World Election Bodies meeting also, India's leadership automatically suo moto gets accepted of the Election Commission in guiding the election integrity. So there are two parts. One is the overall democratic functioning. Second part is the delivering elections, integrity of the election process. When it comes to the integrity of the election process, India becomes the natural choice, and world over, our leadership is accepted. You saw recently in the conference which just got over, Greece accepted co-leadership with us. Mauritius accepted co-leadership with us. IFES accepted co-leadership with us. The dignitaries from world over came, and we are going to do 2 more conferences like this. So we'll, by action, continue to show that we are 100% impartial, and whenever the specific instances are there, please bring it. We have given you a challenge on C-Vigil, bring it to our notice. If we do not respond in 100 minutes, then please ask us that specific question. Next question, Aishwarya. Ma'am. Mic आपके पास है ऐश्वर्या? Switch on the mic, please. Hello. Hi sir, this is Aishwarya from Aaj Tak. So one of the allegations is कि PM का दौरा था गुजरात में, उसकी वजह से जो चुनाव की डेट है उनको पीछे खिसकाया गया। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? सर, ये तो हम कवर कर चुके नीरज, इसका जवाब मैं आपको इसको दे देता हूँ। इसका आंसर मैंने मल्टीपल फैक्टर्स के केस में दे चुका हूँ। कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन पहले हम अभी भी कर रहे हैं, और ये भी संज्ञान में रखिए कि रिसेंटली एक दुखद घटना भी वहाँ घटी, उस वजह से भी थोड़ा हम लोगों को डिलेट हुआ। आज कल भी जैसे वहाँ स्टेट में स्टेट मॉर्निंग थी, तो इट्स ए मल्टीपल फैक्टर्स। सर नीरज, न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। मेरा सवाल है कि अभी आपने तमाम राजनीतिक दलों को पत्र लिखा था कि आप जो घोषणा पत्र में चुनावी वादे करेंगे उसका फॉर्म में जिक्र देना होगा कि धन कहां से आएगा, राजकीय एक्सचेकर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस योजना का, आपके प्रस्ताव का विरोध किया है कि चुनाव आयोग के मैंडेट में नहीं आता। चुनाव आयोग की टिप्पणी क्या है उन जवाबों पर, और चुनावी वादों के प्रति और मतदाताओं के प्रति जो राजनीतिक दल अपने वादे करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो वादे पूरा करें। और एक जानकारी चाहता हूं आपसे, आपने कहा था कि पिछले कई वर्षों में आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कम किया है अवधि को, तो क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में यह सबसे छोटा अवधि है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? ये जानकारी चाहता हूं। थैंक यू। पहले और कोई है? पहले एक और ले लीजिए। रिकॉर्ड ले लेता हूँ मैम। रमन, न्यूज 24। इससे रिलेटेड हो तो कहें।
इससे रिलेटेड ये गुजरात विधानसभा चुनाव की अवधि, विधानसभा की अवधि 18 फरवरी तक खत्म हो रही है। उससे काफी पहले आपने चुनाव की घोषणा की। अगर चुनाव की घोषणा करनी ही थी तो हिमाचल के साथ क्यों नहीं की? हो गया पूरा ये? मैम वो भी है, मैम यहाँ पे वो भी है। सौरभ शर्मा फ्रॉम एटीवी भारत। सर, अभी कुछ दिन पहले गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि दिवाली से पहले कि जो भी ट्रैफिक रूल वायलेशंस करेगा अक्टूबर 21 से 27 के बीच में उसके खिलाफ कोई वायलेशन का बैन नहीं लगाया जाएगा, कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा। अब तो चुनाव आयोग ने आज शेड्यूल अनाउंस किया है, तो क्या आने वाले टाइम में अगर ऐसी और अनाउंसमेंट्स करी जाती हैं तो चुनाव आयोग का क्या रिएक्शन रहेगा? दो तीन चीजें। पहले सबसे पहले कि सबसे कम टाइम है कि नहीं है। दिल्ली के जनरल इलेक्शन में भी एग्जैक्टली इतना ही टाइम था। दिस वाज द schedule was declared on 14/1/20 and date of completion was 13/2/20, giving exactly 38-39 days. So it is not the first, number one. Number two, आपने पूछा था कि हाँ पहले क्यों नहीं किया, तो आप यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च में होने वाले हैं वो उसके साथ क्यों नहीं। ये एक, एज आई एक्सप्लेन टू यू, देयर आर 3 more चुनाव, 3 और चुनाव होने वाले हैं जो मार्च से पहले पहले पूरे होते हैं। ये फरवरी में पूरा होता है तो ये साथ में क्यों नहीं। सो ये, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स decision making activity which takes into account number of things, including the conventions, including the availability of forces, including the weather, sees how to club, which to club, what time to club. So it's a variety of factors which I have explained to you, and on that basis it's not the least. Sir, now coming to the matter of मैनिफेस्टो यू आस्क्ड, तो पहली बात तो आज इस कॉन्फ्रेंस में उसका विषय नहीं है, तो आई विश विल टॉक टू यू अबाउट इट इन डिटेल सम अदर टाइम। बट बहुत ब्रीफली, वर्ल्ड ओवर यू हैव लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन द डेमोक्रेसीज जहां पॉपुलिज्म की वजह से, उस तरीके के अनाउंसमेंट्स की वजह से सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक कंस्टेंट्स एंड स्ट्रेसेस आर विजिबल इन द डेमोक्रेसीज। यू हैव सीन इट इन वेरियस प्लेसेस। आई शुड नॉट बी नेमिंग एनीबडी। आई कैन गिव लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बट इट्स नॉट सेफ। सो व्हाट इज बीइंग टॉक, द कमीशंस बेसिक जिम्मेदारी और बेसिक प्रिंसिपल क्या है। राजनीतिक पार्टियां और जितने भी स्टेक होल्डर्स डेमोक्रेसी में हैं वो सब एक बहुत ही स्ट्रांग इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है, उनके भी अधिकार हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, सभी कैंडिडेट्स का अधिकार है कि वो जो भी चीज वोटर्स को प्रॉमिस करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो करें। दैट इज व्हाट द मैनिफेस्टो इज ऑल अबाउट। बट एट द सेम टाइम it is also the right of the voter, right of the country, right of the experts, right of the media, right of the academics, right of researchers, right of economists to know whether the promises being made, I mean, how are they? Are they the best promises they deserve? They are able to be fulfilled. It's just for the public debate. It's for informing the voter. So the commission is working all through, not now, on a basic principle of disclosures, पारदर्शिता और डिस्क्लोजर्स। वोटर को ये पता लगना चाहिए कि वो किस चीज पर असेस करे और किस चीज पर वोट दे रहा है। सो जो हमारी एमसीसी की एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं, दे टॉक अबाउट 2 थिंग्स विच इज ऑल्सो द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन बालाजी केस, रैशनल ऑफ द प्रॉमिस एंड वेज एंड मीन्स ऑफ द प्रॉमिस। Whatever is being attempted is only to provide a standardized format to make that rationale and the ways and means position. That's all. Let the voter decide. Let anything be made. But the matter is, we have received some observations, some comments. So, at the right moment, we will, right occasion, we will respond to those.